Hello, good evening, everyone. So I'm good to be back now and आज मैं पूरा यूपी वाले फॉर्म में हूँ जैसे मैंने आप लोगों से बात किया था तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कानपुर में हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग माय टाइम राइट Hello, नाउ good evening, everyone. So I'm good to be back now, and one second. So I'm enjoying my time here and things are there and काफी हेक्टिक रहा आज का दिन मेरा क्लास के अलावा और सारी चीजें जो है सो आई वाज इन विद इकरा यस स्टूडेंट्स ऑफ कानपुर टू गंगा बराज and I visited ISKCON temple as I've discussed with all of you in Zoom session. So मुझे अच्छा लगा कि I am right now teaching and interacting with students everywhere. आज के सेशन का मेन पार्ट ये है that I will cover UN initiatives. यूनाइटेड नेशंस के जो इनिशिएटिव्स हैं वो मैं कवर करूंगा वन बाय वन and I'll keep it bilingual so that everybody who have joined by YouTube channel or they are right now in Zoom session and whatever topics I highlight, please make sure you note it down somewhere. और जो जो चीज़ों को मैं यहाँ पर बताता जाऊंगा वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को करते हुए तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है? तो लेट मी जस्ट let me start. See, what I'll do in today's session is that since our topic is UN initiatives, United Nations initiative part of it, तो मैं इसमें ऐसा करूंगा कि जो भी UN initiatives हैं, I will be going to UN websites, United Nations websites, right? Certain organizations of UN, and recent time, what are the focus areas? Now, what are the focus areas? What are new initiatives have been taken? Where coming exam, probably questions will be asked. कि ऐसी क्या चीजें हैं जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा काफी फोकस दिया जा रहा है और जहां पर प्रोबेबली इस बार के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, वो चीज को हम लोग फोकस करेंगे और मैं इसको बाइलिंगुअल रखूंगा ताकि चीजें आप सबको समझ में आए और आप लोग इसको अच्छे से कर पाए यहाँ पर, है ना? तो वो चीज है यहाँ पर जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चीजें आप लोगों को एक एक करके चीजें हो। जो कुछ मुझे लिख के समझाना होगा आई राइट इट डाउन। कुछ चीजें कुछ पॉइंट होंगे जो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, हाईलाइट करना हो तो आई यूज माय नोट पैड, आई विल डू दैट वन, ठीक है? सो लेट अस डू वन थिंग हियर। आई विल शेयर माय स्क्रीन जैसे मैं आई एम डूइंग एवरी टाइम, so we'll go into that one, right? So let us start with the topic one by one. Let's look at here. What you see right now, right? What you see right now, this is the home page of UN Habitat, United Nations Habitat, right? It's a very important UN body which looks into urban environment and the habitat part of it. And if you look at here, there will be World Urban Forum in Cairo from 4th to 8th November 2028. See, UN every year organizes a lot of summits and part of it. So there, so what is very important is that in this context, right? In this context, let us look into some of the initiatives part of it, right? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो कुछ भी आपको ये करना है, जो कुछ भी इनिशिएटिव्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा होता है वह कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। अब जैसे वर्ल्ड वाटर डे, विल बी डिस्कसिंग टुडे वर्ल्ड वाटर डे and in the month of March it was celebrated. Now see, cities are missing piece of like climate change here. 12th session of World Urban Forum. If you look at this one, I have just reserved, right? कई बार यूपीएससी पेपर में फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी आता है. Sometimes UPSC asks question which will future based question there. कई बार कॉन्फ्रेंस, समिट, those type of questions are asked. और कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पर ध्यान बहुत कम गया है.
I'm just trying to highlight those type of topics where probably the current affairs materials or newspapers have not given due importance. Now look at here this Sustainable Development Goals, right? SDG. They also comes from there. Now what is very important here? I will annotate it. I will mark it. Okay? And the document will be shared to you after this session there. So what I'm now doing here, let me just highlight the things here, right? Let me highlight here. Right? Now look at here. Number is not very important. 12th session, the 12th number is not very important. Will be is a future based, but what is the theme here? See here. इससे आपको समझ में आएगा कि emphasis कहाँ दिया गया है. It is all starts at home. Local actions for sustainable cities and communities. What is given? It all starts at home. इस बार का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन जो होगा, सी कई बार इन्वायरमेंट क्वेश्चन क्या होता है जहां ग्लोबल लेवल पे पूछते हैं, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल initiatives. This time there will be number of questions which will focus at local level initiatives. I'll again repeat it. इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि ग्रास रूट लोकल लेवल के इनिशिएटिव्स को फोकस करेगा. Right? You find in the prelims exam either questions asked on global conference, summit, reports and all, or you find what the central government, Minister of Environment, Forest, Climate Change carry out. Now, if you look at here, what is given here? Local actions. And I'll bring some of the initiatives there. And that is linked with SDG. Sustainable cities and communities. This is linked with Sustainable Development Goals. Right? And if you look at here, what is very important here? When you come to UN Habitat, that's basically a platform. That's basically a body of the UN. Now, if you look at here, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इस बार फोकस क्या होगा? Localizing the sustainable goals on the local actions, whether it is a pollution abatement, pollution control, protection of forest, biodiversity, fighting climate change, all based on local level, that will be given focus, right? जो कि ग्लोबल चैलेंजेस के लिए. अब यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस है, अर्बनाइजेशन पे फोकस करता है ये, ठीक है. कब ये स्टार्ट हुआ था? 2001 में. If you see here, World Urban Forum, WUF, which is a conference sustainable urbanization, was started from United Nations in 2001. And today, urban areas, what are the problems of the urban areas? Urbanization, impact on the communities, cities, economies, climate change. अभी कई cities जो है, even in India, Delhi, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, are facing big problems, challenges are there, right? So here, unique non-legislative platform and one of the most inclusive international gathering on urban issues. And you'll see here Cairo. It will be in the Cairo, Egypt. Right? This is what is coming here. Now let's understand here. What I would like to highlight here. Let me go into this part. अब यहाँ क्या समझना है आपको? What are the very important part which you need to focus on that? Recently, and this all topics you have to read it very carefully before prelims exam. One is this one.
लास्ट few years लगातार ये न्यूज में रहता है. Continuously it is in the news. Particularly if you look at here, recently Bangalore, right? Bangalore has faced the problem. Then Chennai, summer. Then I'm giving you Delhi. Every year during the summer, these are three cities which are facing there. There's something called this one, Zero Water Day. In 2018, I think so. Cape Town in Africa observed Zero Water Day, a day where there was no available drinking water. No water was available to the tap water and all this. इंडिया के बहुत सारे शहर जो है जल्दी ये प्रॉब्लम फेस करेगा जीरो वाटर डे. यूएन की जो इनिशिएटिव्स हैं अब इस पे काफी फोकस किया जा रहा है. JWD ये जो वर्ड है, दिस वन, दिस इज नाउ गेटिंग हाईलाइटेड एवरीवेयर, राइट? जीरो वाटर डे जो है ना, उसके लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं, राइट? बैंगलोर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, बेलांडूर लेक, is facing the problem. And Bangalore, rapid urbanization of Bangalore, and the lakes are drying up, right? Lakes in the city is drying up there. Then outskirts of Bangalore, the construction work, human settlement, extraction of groundwater, है ना, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है. अगर आप यहाँ देखो, आप if I just bring here, let's look at here. I'm just trying to bring here. So this part I'll just save it here so that you are able to get all those kind of thing here, right? And I'm giving the headline also there. UN Habitat we're saving right now, right? Conference. And I'll share this one. This document, I'm going to share it. Now let's look at here. अभी जो लेक है बेंगलुरु, कई सारे, and it's not only this year, right? This controversy coming in the news. Right? It's controversy coming in the news. Look at you. It's controversy coming in the news here. Right? It's given here. And again, what is happening? Rainy season and all, very less there. Now see here. Next round of water cut in Bangalore to target big consumers. Now see here, Bangalore can become worse than Cape Town. Cape Town had zero water day. Bangalore can face the same problem there. The water crisis there. Right? This water crisis, if you look at this one. And this is now becoming more severe here. See here. Bangalore has given about the south water, this one, water scarcity. Dryness, that means less rainfall, water. There's all this one. And you know that there's one very important river, Kaveri River. The city is 60% water, right? What is happening there? People are using more groundwater. And the water from Kaveri Basin. Now, because of deforestation over time period and the impact of climate change, water is not being retained in the groundwater. अब groundwater पानी ही नहीं आएगा, groundwater recharge नहीं होगा, तो obviously ये groundwater तो use हो रहा है, उसका recharge नहीं हो रहा है,
that is going to be there. Now see here, in the last 5 decades, 45% of forest cover, right? Now only 18% is left in that Kaveri region. So when the trees will not be there, water will not be retained there. And why there is a depletion of groundwater? Mostly, you know, the Bangalore, there's houses and all this. A lot of construction and home, which is there. That part comes here, right? The part is making here the water crisis problem. And you can see here, this is the where you find there, right? This is what you have. Videos also there. Cape Town, like I've said, Cape Town in Africa, South Africa, had a 0 water day, right? This is what the scenario is all about. तो मैंने बताया इस बार के लोकल लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे, राइट? एंड यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट. अब यहाँ पे इनिशिएटिव्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल यूएन वाटर, यूनाइटेड नेशन हैज अ बॉडी कॉल्ड यूएन वाटर. लेट मी गो टू द यूएन वाटर, 11th वर्ल्ड वाटर फोरम. और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली इसका रिपोर्ट आया हुआ है. रिसेंटली वर्ल्ड वाटर फोरम, this was in Istanbul, Turkey on 17th February 2024. World Water Forum, and ये 3 साल में एक बार होता है. Now if you look at part of it here, this one, if you look at here, this one, World Water Forum जो है, now here it is held every 3 years. और इस साल ये हुआ है फरवरी में. तो प्रोबेबिलिटी है कि प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट. रिसेंटली जस्ट इट वाज इन द न्यूज. फरवरी में दिस समिट वाज देयर, राइट? वर्ल्ड वाटर फोरम का. नाउ व्हाट हैपेंस, जब ऐसे फोरम्स होते हैं, गवर्नमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, they all attends, even the private sector, right? Scientific organization, all they participate in this kind of a summit there, and they delve into deeper issues there. जो भी ऐसे चैलेंजिंग इश्यूज है, इस पे डिस्कशन होता है और इनिशिएटिव्स होते हैं. अब आप देखो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है. ये कब से स्टार्ट किया गया है? ये जो है समिट जो है, ये कब से स्टार्ट हुआ? 97 से. वाटर सिक्योरिटी है ना, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है यहाँ पर. अब इसके बारे में अब देखो क्या क्या फोकस हुआ है. स्मॉल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई गाइडेंस, WHO, World Health Organization has come. Then you can see UNICEF, WASH, WASH for peace, guidance and tools. What is WASH? Water, sanitation and hygiene. Then you can see WMO report, state of the global climate 2023. 19 मार्च को ये रिपोर्ट आया हुआ है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 in terms of global climate. So you know UN reports, जो भी UN के reports होते हैं, one can get the questions on the UN reports. जब भी ऐसे reports होते हैं, जैसे for example climate change is impacting water bodies, right? And you can see here this given here. Let's say if I go to here, right? ये UN water का यहाँ पर site यहाँ पर है, right? This one WMO report. है ना यहाँ पर चीज. और आपको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज समिट, पेरिस एग्रीमेंट, where 1.5 degrees Celsius governments are trying to reach that kind of target there.
You have read about loss and damage, L&D, climate change impact on those kind of high risk countries, vulnerable countries. तो वहां पर ये वार्मेस्ट है, हर साल टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है, एवरी ईयर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। तो मेरा यही कहना है कि करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उतना ज्यादा कवरेज नहीं हुआ है, like Paris Agreement, COP28, climate change summit. I've covered everything in my channel also. And wherever I'm teaching, I'm taking the class, I'm discussing those areas. Today, again, in this session, I'm trying to re-highlight those areas. You have to read in that case. ठीक है, मैं अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि COP27 में, when Conference of Parties 27, शर्म एल शेख इजिप्ट में, वहां पे वाटर को लेके इनिशिएटिव था, राइट? अवेयर करके था, अवेयर, AWARE. Let me write here. When this initiative was launched, not COP28. कई बार ऐसा भी होता है कि यूपीएससी कैन गो टू 1 year बैक ऑल्सो देयर, अर्लियर कॉप के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। COP27, दैट वाज दिस वन, UNFCCC Paris Agreement climate change summit was there. Last year was 2023, it was held in 2022. आपको करंट अफेयर्स हमेशा 2 साल का विंडो लेना है, ऑलवेज हैव टू डू दैट। ठीक है, अब जैसे मैंने ये स्कीम का नाम बताया, अवेयर, this particular program here I've taken. Now let's look at here. I'm not getting to that program there. If you look at here, I'm getting back to here. See, Safari is not opened, but I'll take you to the aware scheme of that. क्या पता इस बार के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए, राइट? Bangalore crisis, Delhi crisis, Chennai crisis, all are there. But sometimes what they do, they ask question from anything from international initiative there. है ना? So aware, like global initiative, local मैंने बताया कि there might be question, but now you will see this one, COP27, right? है ना? Action for water adaptation and resilience. Action for water adaptation and resilience. और कई बार आपको पता है क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं, राइट? यूपीएससी आस्क इन द क्वेश्चन फैक्ट्स. Let's look at here this one. Data is there. Last 20 years, total water storage. Loss of 1 centimeter water equivalent every year is getting less, right? Then you can see here this one, drought. You see the drought, all what you see here, high, medium, right to low drought condition. And if you look at here, drought condition in India. अब ध्यान से इंडिया का मैप देखो आप, 2/3 areas of our country that is facing high or medium or low level drought condition. See, India is reeling towards big water scarcity problem. इसलिए बताया कि लोकल लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, लोकल एस्पेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, इवन यू कैन सी सदर्न पार्ट आल्सो देयर, लाइक कर्नाटका, वेस्टर्न पार्ट पता है, महाराष्ट्र वगैरह, विदर्भ,
Then central part Bundelkhand, right? Bundelkhand and all this. So what you see here, this is what you have there. The report goes, climate change report, right? And you will see here this given the data. Knowledge priorities, जो है, population at risk, flash flood, drought, riverine flood. Now here, see here. What is main part? This is the main part. Inclusive cooperation to address water as a key to climate change, adaptation, resilience, right? Solution part of it. And it provide neutral objective. कई बार क्वेश्चन पेपर में क्या होता है? Exactly same sentence, same key point what is given in the, that is mentioned in the question paper. Exactly same language, same words, same sentence क्वेश्चन पेपर के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आता है. ये चीज है. देखते हुए कि ग्रे वाटर स्टोरेज जो है, विजन यहाँ पर ये है 2030 तक में कम पानी जहां पर है, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, वॉट एवर थिंग देयर, तो उसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है. इंटीग्रेटेड वाटर एंड क्लाइमेट एक्शन जो है, स्टैंडर्ड एसडीजी गोल्स यहाँ दिया गया है. वाटर बजट, कितना वाटर अवेलेबल है, कितना वाटर यूज हो रहा है. वाटर से जुड़े हुए जो नेचुरल कैलेमिटीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो पार्ट आता है. एंड यू कैन सी सपोर्ट वाटर पॉलिसीज. नाउ दिस कुड बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सपोर्ट वाटर पॉलिसीज, प्रोवाइड वेयर पॉसिबल मींस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना, सारी चीजें. मेथड फॉर क्लाइमेट चेंज, कॉपरेशन, इंक्लूसिव एक्शन. सी हियर दिस पार्ट. वर्क स्ट्रीम वाटर रिसोर्स पॉलिसी, ट्रस्टेड चीज है. अब यहाँ है ना ग्रीन वाटर which you get from the normal source there, natural source, greenhouse gas accounting, है ना, कमिटमेंट टू मल्टीलैटरल एग्रीमेंट. अब देखो डिलीवरी एक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एस्टैब्लिशिंग सेंटर ऑफ वाटर क्लाइमेट एडेप्टेशन, अवेयर प्रोग्राम का ये पार्ट है. फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल लेवल, नेशनल रीजनल लेवल, है ना. सपोर्ट कंट्रीज वाटर रिसोर्स असेसमेंट, ग्लोबल वाटर रिपोर्ट, देन ट्रेनिंग पार्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वार्निंग सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, ड्रॉट एंड फ्लड, साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑन वाटर. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं यहाँ बता, ये चीज है मराकेश. मराकेश पार्टनरशिप एक्शन, एडेप्टेशन एक्शन कोलिशन, वाटर एंड क्लाइमेट कोलिशन. एक ग्रुप बनाया गया है जहां पर वाटर एंड क्लाइमेट को जोड़ते हुए कोलिशन है. कई बार क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स एग्जाम में कोलिशन, अलायंस क्वेश्चन आता है वहां पर, राइट. तो ये चीज वहां पर है ना, ये चीज है. रिवर्सिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड सरफेस, more crop per drop. Even this is the program of central government, Ministry of Agriculture. Less carbon dioxide, this is US development there. 50% less damage from flood and drought by 2030. Monitoring program, and 50% cost of maladaptation. These are resulting from lake methane emissions. See, reduce methane emissions. See here, reduce methane emission from lakes and reservoirs. है ना, यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये चीज था उस समय का रिपोर्ट है ना, ये उस समय का रिपोर्ट है. This aware program. So what I'll do here, I'll again save this for all of you. Okay, I am saving this one for everyone. This report. I'll share in the Telegram group. एक बार आप प्रीलिम से पहले इसको देख लेना है, इसका रिव्यू करना है. ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. ठीक है, तो बैंगलोर का प्रॉब्लम मैंने बताया यहाँ पर, दैट व्हाट कम्स हियर. देन कमिंग टू हियर, सी हियर, I'll now come to this. I mentioned that WMO report का जो है, अब ये WMO रिपोर्ट वगैरह सो जो है यहाँ पर ये चीज है. Then what comes here? Now let's look at UNEP, United Nations Environment Program. Now look at here, this one. West pollution crisis.
ठीक है। अभी क्या दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज रिपोर्ट क्या आ रहा है, जो वेस्ट वगैरह है, अगेन दैट इज एरिया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, राइट, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। यहाँ 8 ways to overcome this was given solution part। अब यहाँ पे सबसे पहले ये चीज है, these are 3 goals, SDG goals, which are connected with waste management। अब जीरो वेस्ट भी बात हो रही है ना, गुड हेल्थ एंड गुड वेलबींग, गोल नंबर 3, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, गोल नंबर 13, सॉरी 11, गोल नंबर 11, responsible consumption production, goal number 12। And you will see here again, International Day of Zero Waste, what is waste pollution, global waste management outlook report। Now see again, the report has come, global waste management outlook report, right? Waste wise cities tool। Now if you see here further, ये जो part है, this one, municipal solid waste every year 2.1 billion to 2.3 billion tons, and electronic, food, plastic, all these emit greenhouse gases। तो 30 मार्च को ये समझना है, 30th मार्च मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। और किस कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूएन हैबिटेट, अभी जो मैंने बताया यूएन हैबिटेट, एंड यूएनईपी, राइट। कंजम्पशन वगैरह में, ओवर कंजम्पशन किलिंग अस, ह्यूमैनिटी नीड्स इंटरवेंशन, जीरो वेस्ट डे, and what is called circular economy, what is called here circular economy, we have to promote circular economy। and you can see here this अब ये चीज है, कॉम्बैट फूड वेस्ट, है ना, यहाँ पर ये चीज है। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये चीज है, टेक ऑन टेक्सटाइल वेस्ट, and textile, what about the cloth, and when the cloth is there we discard it। अब जैसे इंडिया में टेक्सटाइल वेस्ट के लिए अलग से कोई रूल्स नहीं है, whatever we use the garments, right, huge amount of garment waste is the textile there। then again avoid electronic waste, e-waste, and there's something called EPR, extended producer responsibility, where the manufacturers have to recycle it। then you can see here this one, reduce resource use in plastics or products there, जो वहां पर यूज है वहां पर है। फिर यहाँ क्रैक डाउन ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन, hazardous waste, राइट। यहाँ पर 3 बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आता है, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम। व्हाट आर द कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, hazardous waste, rotterdam, prior informed consent, and stockholm। then you can see multilateral part, rethink how cities are designed and managed। see here west wise cities, African clean cities program, then again 2020 the UN champions of the earth, every year this award is given। then again see bolster west management through investment and training, given here। अब जैसे ये चीज है, यहां पर जो है दिस एरिया वेस्ट वाइज सिटीज जो है, राइट। नाउ दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी, which one, UNEP, see zero waste day is coming there, 30th March। and as you can see here, UN Habitat address the increasing global waste management crisis। ऐसे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, that you need to be aware of। so what I'll do here, I'm again flagging this, again I am flagging this one, and I'll share in my Telegram channel।
right? I will flag this one in my, I'm flagging this one and you'll have this particular document. दूसरा ये चीज है 8 ways. I'm again, I'll share this document. ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ so that you are able to read before the exam, and I'll share it this one. 8 ways to combat West. ठीक है, नाउ लेट्स से तो क्या फोकस करना है आपको अभी, नेक्स्ट क्या करना है इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, दिस वन. जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, ये जीरो वाटर डे, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट हियर. अब इसमें क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है, कौन सा आता है, बैसल, बैसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन. दिस कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इस बार के पेपर में इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है. और स्टॉकहोम, स्टॉकहोम किससे डील करता है पंकज? ये 3 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टॉकहोम किससे डील करता है? हजार्डस से सर. नहीं नहीं, हजारस तो ठीक है, बैसल हजारस बेस्ट है, रोटरडैम. बट स्टॉकहोम किससे डील करता है? persistent organic pollutant like chemical pesticides, chemical insecticides, herbicides, weedicides, POP कहते हैं, persistent organic pollutants. Rotterdam looks into hazardous chemicals and waste which flow from one country to another prior informed consent. Basel is dealing with hazardous waste. तो यहाँ पर ये चीज है. और जो भी रूल्स है, that means you have to look into this one. One question can be asked on all this area. ये जो चीज है, अब रिसेंटली क्या है, बैटरी वेस्ट पे भी कुछ आ रहा है कि बैटरी के लिए अलग से, बैटरी वेस्ट वेस्ट को डील करने के लिए भी रूल आ रहा है. अभी मैंने क्या बताया, टेक्सटाइल वेस्ट, देन बायोमेडिकल वेस्ट. ये सारा जो है, ये सारे ऐसे जो रूल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में लाया है, उस सभी चीजों को, उसके मेन हाइलाइट्स को वी हैव टू रीड. दैट कुड बी अगेन अ क्वेश्चन इन द एग्जाम, है ना, वहां से कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है. अब मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है, ये चीज को वहां पर करना है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स नोटिफाइड किए गए, जैसे ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बाकी जितने भी चीजें हैं, उसको जाके पढ़ना है, रिवाइज करना है, राइट. यू रिवाइज देयर. एंड ये मैं पॉइंट लिख दे रहा हूँ, ये मैं नोट पैड में क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको जब आप पढ़ें तो आपको पता होगा, चाहिए ये चीज एरिया जो है इस बार प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको वहां पर फोकस रखना है. और अभी जो मैंने भी क्या बताया यहाँ पर, ये चीजें है ना, वेस्ट वाइज सिटीज, क्या लिखा हुआ है, वेस्ट वाइज सिटीज. नाउ दिस व्हेन यू से वेस्ट वाइज सिटीज प्रोग्राम, है ना, ये किसके द्वारा है? वन इज यूएनईपी एंड सेकंड विच इज द बॉडी हियर, यूएन हैबिटेट. तो ये प्रोग्राम को ध्यान में रखना है. आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट देयर, राइट. तो वहां पर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि ये ऐसे सेशन में, कि ऐसी चीजें जो है जहां कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में है या कहीं भी कुछ भी है, तो आपको मैनेज हो सके. ठीक है, लेट मी सी द एनी डाउट देयर. यस सौरभ, गुड इवनिंग. यस मिस्टर भास्कर राव, गुड इवनिंग सर. एम कुमार, गुड इवनिंग. So I'm just trying to highlight where the UN initiative you need to focus on that. Now, recently, UNEP has come out with zero, right, plastic dropped, plastic waste convention.
अभी इस पे काफी डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है ये ग्रे एरिया है जहां पे क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस वन, प्लास्टिक वेस्ट कन्वेंशन, राइट, यूएनईपी। Who set the questions? Questions are set by subject matter experts. अब ये फाइनल फेज में, कहां पर है? फाइनल फेज में। क्या पता इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम में ये जो ड्राफ्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो कन्वेंशन है, दैट इज मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, उससे कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पे क्वेश्चन आ जाए। सपोज क्वेश्चन कम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट कन्वेंशन। 1 2 3 4 स्टेटमेंट्स आर देयर। लेट्स लुक एट हियर। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, हमेशा क्यूरियोसिटी को रखना है, राइट। नाउ लुक एट हियर, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ ड्राफ्ट प्लास्टिक कन्वेंशन। जो चीजें जहां पर करंट अफेयर का मटेरियल फेल हो जा रहा है, आपको आगे जाना है। अब यहाँ पर भी है, ये ट्रीटी नेगोशिएशन पूछा गया है, ये जो ओनली आईएएस और पीडब्ल्यू का आया हुआ है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन से डाउन टू अर्थ। नाउ लुक एट हियर दिस वन, राइट। दिस I'm just down to earth magazine I'm offering you. What are hits and what are misses, है ना, क्या चीजें उसमें किया गया, कौन सा चीजें नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर, मैं इसको आई हाईलाइट द पॉइंट। जीरो ड्रॉप जो है यहाँ पर, ये बहुत फाइनल फेज में है, इज ऑलमोस्ट द फाइनल फेज फॉर गवर्नमेंट टू डिसाइड दिस कन्वेंशन। नाउ सी, second meeting of intergovernmental negotiation committee was there held on last year May. Then there is the zero draft. Kenya, Nairobi is the headquarter of United Nations Environment Program. UNEP is headquartered there. Now see here, zero draft has 10 placeholders to discuss issues like the preamble, definition, principle, scope. What is placeholder? Because of the fact that all the matters of legal instrument have not been discussed there. Now look at here, this one. वो इंपॉर्टेंट, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। क्या होता है कन्वेंशन? क्या होता है? कई बार कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग होता है, which asks the government to take action. So now if you see here, really there, so now what is given here? Crude oil extraction of the sea, life cycle of plastics and its stakeholders, extraction, sourcing raw materials, oil and gas industry, chemicals, petrochemical refineries, chemical manufacturers, materials, प्रोडक्ट, ये सब जितना भी है ना, वेस्ट रिफाइनरीज। What they have created, the role created no ambition coalition, which keep the hope for a strongly legally binding instrument. That means governments are pressing their for legally binding instrument, जहां they have to cut down plastic use. ठीक है? Now what is given here? See here, this is one. No ambition coalition. Now this could be important for the exam. किससे जुड़ा हुआ है? याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। No ambition coalition is in context of what? ABCD. This is what you know, plastic convention. क्या है coalition ये? Now see, is a group of countries with economic interest in increased and unsustainable production of polymers and plastics. क्या है ये coalition? ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इंक्रीज अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक करता है। उन्होंने ट्राई किया कि पूरा का पूरा जो लीगली बाइंडिंग करने के जो गवर्नमेंट के प्रयास, जो गवर्नमेंट चाह रहा है, उसको हटाया जाए। अब आप देखो यहाँ पर ये चीज है, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है।
What the draft talks about? Look at here. Reduction in the production of primary plastic. Now see here, another thing, elimination of polymers and chemicals of concern. प्लास्टिक में किससे बनता है? पॉलीमर से बनता है, और उसमें कुछ ऐसे पॉलीमर्स होंगे जो डेंजरस होंगे, हजार्डस होंगे. देन अगेन यू सी एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लमैटिक अवॉइडेबल शॉर्ट लिव्ड plastics. Right? Now see here this one. Third thing is what? Fourth thing is this one. Transparency measures including labeling mechanism. Label there. And then what? Transition. अभी रिसेंटली क्या हुआ है? बायोप्लास्टिक की बात हो रही है. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात हो रहा है. और यहाँ पे क्या इंफोसिस होगा? ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. टारगेट होंगे. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट? टारगेट्स. Under this convention, targets will be given to countries to reduce and also reuse. The target will be there. Right? तो ये चीज यहाँ पे कवर किया गया है. एनेक्सर होंगे जो कि स्ट्रांगली डिफाइन करें. अभी कहां पर ये बात अटका हुआ है कि वेदर ये प्लास्टिक कन्वेंशन बाइंडिंग होना चाहिए, नहीं बाइंडिंग होना चाहिए, वेदर इट विल बी बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग. देयर द मैटर इज स्टक. नाउ दिस कुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. राइट? तो यहां पर यही बात में हो रहा है कि कैसे इसको किया जाए वो. राइट? तो ये इफ यू सी ब्रांड ओनर एंड ऑल दिस recyclable plastic and all this given there. Right? Member state there's a given part of it there. And what is another thing you have to know? This one, no ambition coalition is a group of countries with economic interest in increased and sustainable production of polymers and plastic. अब आप देखो, अब ये नो एम्बिशन कोलिशन है, वेदर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट नॉट. कौन से कंट्रीज है वो क्वेश्चन आ सकता है. राइट? So I'll save this file and share with all of you. Draft plastic. I'm just typing here. Pollution convention. ठीक है? और ये आर्टिकल कहां से है? DTE, down to earth maximum. I have saved it, and you'll get after the session in my Telegram channel. Now look at here. No coalition. What is the name of the country here? This one. I'm just going to here. No ambition coalition. Right? See, hijack Paris summit. Which are the country? These are oil, gas, and polymer producing countries. They are called no ambition coalition. Right? ये क्वेश्चन आ सकता है. नो एम्बिशन कोलिशन जो है, इसमें जो प्लास्टिक और पॉलीमर्स, इसमें जनरल कौन होता है? ऑयल कंट्रीज. राइट? ऑयल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट. नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर? No collision, this one. No ambition collision. Now see here. No ambition collision. Let me write here. No ambition coalition. Okay. Now I'll write here plastic. Now look at here. Now look at here. एक तो दूसरा है नो एम्बिशन कोलिशन और दूसरा है हाई एम्बिशन कोलिशन. Another thing has come. All this what has come in the news. Calling for ambitious plastic pollution deal. Right? ये पार्ट है. अब यहाँ पे एक हाई एम्बिशन कोलिशन भी है. देखो मैंने भी सर्च किया ना. I've done the search here and you can see here this one. One is no ambition collision. These are group of countries which produce plastics and such polymers. कई बार पेट्रोकेमिकल वगैरह होते हैं, पॉलीमर्स वहां से आते हैं.
रिफाइनरीज एंड ऑल दिस, वहां से वो पॉलीमर्स वगैरह होता है। और एक और क्या है, हाई एम्बिशन कोलिजन, ऑफ सी दिस वन। तो यहाँ पर दो दो तरह के ग्रुप है। एक है जो चाहता है कि बाइंडिंग कन्वेंशन नहीं हो, प्लास्टिक के लिए बाइंडिंग कन्वेंशन ना हो, ताकि उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो चलता रहे, तो वो नो एम्बिशन कोलिजन हो गया। और एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो हाई एम्बिशन कोलिजन है, जो चाहता है कि प्लास्टिक कन्वेंशन बाइंडिंग हो, दे वांट प्लास्टिक कन्वेंशन टू बी बाइंडिंग। So you can see here, they want legally binding part of it. High ambition coalition to end plastic pollution is committed to developing an ambitious, internationally legally binding instrument based on comprehensive circular approach. है कि नहीं यहाँ पर ये चीज? There are the group of countries are there. समझ में आ रही है बात? तो ये याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. That could be a question also be asked in the exam. See here, end plastic pollution by 2040. Target year they have set up. See, plastic pollution considered a planetary crisis. 20 साल में प्लास्टिक का यूज डबल हो चुका है. एंड नाउ यू नो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज, प्लास्टिक पोल्यूशन, ओशियन, नाउ माइक्रो प्लास्टिक, नाउ वी आर कमिंग फॉर नैनो प्लास्टिक. ये सब प्रॉब्लम है. नाउ सी अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज, है ना, जो चाहता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कम किया जाए या खत्म किया जाए, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, हाई एम्बिशन कोलिजन, टू काउंटरएक्ट नो एम्बिशन कोलिजन कंट्रीज. क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज हैज टेकन द initiative to form this one to end plastic pollution, राइट. और ये किसके द्वारा चेयरमैन इसका? नॉर्वे एंड रवांडा. नॉर्वे यू नो यूरोपियन कंट्री, रवांडा इज अफ्रीकन कंट्री. तो ये लोग चाह रहे 2040 तक में प्लास्टिक पोल्यूशन खत्म हो जाए, एंड हो जाए. सी दिस. नाउ लुक एट द मेंबर्स, दिस आर मेंबर्स, हाई एमिशन पोल्यूशन का मेंबर्स हैं. रवांडा, नॉर्वे, कनाडा, पेरू, जर्मनी, सेनेगल, जॉर्जिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चिली, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, यूके, राइट. ऑल दिस कंट्रीज आर देयर. कैन यू सी इंडिया हियर? इंडिया इज नॉट देयर. इंडिया यहां पर नहीं है. पूरे ग्रुप ऑफ कंट्रीज में इंडिया नहीं है. तो ये याद रखना है कि इंडिया इंडिया का कहाँ रोल आता है जब प्लास्टिक की बात करते हैं एट द ग्लोबल लेवल. सो दिस कुड बी अनदर पार्ट. आई एम शेयरिंग दिस. मैं ऐसे चीजों को डिस्कस करके आई एम डूइंग इट सो दैट यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू लूज द एग्जाम, राइट. हाई एम्बिशन कोलिजन हियर, राइट. अनदर वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट आई शेयर विद यू. ठीक है, यहां समझ में आ रहा है आप लोगों को? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हियर, है ना? तो ये चीजें यहाँ पर, राइट. तो नो एम्बिशन. अब नाउ आई एम राइटिंग हियर नो एम्बिशन कोलिजन, राइट, plastic. Now my question is that countries, you don't get here, है ना, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर आपको नाम नहीं मिल रहा है. हाई एम्बिशन कोलिशन का मिल जा रहा है, नो एम्बिशन कोलिशन का नहीं है. जी, प्लास्टिक पोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये चीज है. Now see multiple countries to end plastic, ये सारा है. Now see another one. Why India should join the high ambition coalition to end there, है ना, कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए यहाँ पर. कौन है नो एम्बिशन कोलिशन कंट्रीज? कौन है? क्रूड ऑयल कंट्रीज, ऑयल रिच कंट्रीज, लाइक यू नो मिडिल ईस्ट,
because they produce petrochemicals, वहीं से पॉलीमर बनता है और वहां से ही प्लास्टिक बनता है, तो वो सब है नो एम्बिशन कोलिशन। ठीक है, तो now if you see this Wikipedia also comes into high emission coalition, ये ना क्लाइमेट चेंज यहाँ से। अब ये देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट से देखो आप, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इनफॉर्मल ग्रुप, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बोले, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद इन यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये जो विकिपीडिया में आ रहा है, ये जो पार्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक एट हियर दिस वन, ये जो पार्ट आ रहा है ना, नाउ दिस बिकम वेरी क्लियर। क्या पूछा जा रहा है, ये क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनफॉर्मल ग्रुप, नॉट फॉर्मल ग्रुप, राइट? एंड विच कन्वेंशन, इट कम्स अंडर यूएनएफसीसीसी, right? And who founded this was founded by Republic of the Marshall Island. When? 2014, 10 years back. तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 being the 10 years, that might be a possible question. And अब सारा चल रहा है, the aim of ensuring the Paris Agreement यहाँ पर है, right? Succeeded in securing the same group secured high ambition coalition also helped. This group of countries also helped in adopting, they put a pressure adopting Paris Agreement. When the Paris Agreement was adopted, कब पहली बार पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया? 2015 COP21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। उसके पीछे भी इस ग्रुप ऑफ कंट्रीज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। They have done in that case, and they now see here, they are this one. What is given here? Paris Agreement most ambitious target for that one, NDC language and all this one. अब यहाँ पे क्या है देखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द मार्शल आइलैंड इज अ कन्वीनर ऑफ हाई एम्बिशन कोलिशन and also secretariat of the HSC. So 2022, these are the countries: Antigua, Barbados, Chile, Colombia, Finland, Fiji, and all this one. All these countries are there. UK is also there. You know, so India is not a member. तो यही क्वेश्चन में लिखा होगा कि whether India is a member or not. India is not a member country. Right? Distinct form में, but coordinates with the shipping high ambition coalition within the. अब देखो ये भी चीज है, in terms of they are also working with this one. The high ambition coalition also is working with, coordinate with the shipping high ambition coalition. अब देखो एक और चीज है, shipping area high ambition coalition within IMO, International Maritime Organization, IMO, which is another body which looks into maritime operation. अब देखो यहाँ पर क्या है, high ambition coalition for nature and the people. So there's so many high ambition coalition. कहाँ nature and the people कहाँ पर आता है? That comes, see here, high ambition coalition for nature and people, which is focused on ambition in biodiversity protection, 30/30. कहाँ पे? CBD, Convention on Biodiversity part. So even this information, you have to always dig out. It always dig out information. And maybe एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप सबका भला होगा उसमें. That will really help you there. ठीक है, that will really help you in the examination. Right? तो ये चीज को ध्यान रखना. Now the what I'm coming here, this one, UNESCO. So what is very important? Let me write here. So what do you have to focus the fifth part from UN perspective? Fifth part will be this one.
or let me do one thing here. इसी में let me just do one thing here. Same point I will come across this one. I am writing in the notepad so that when you revise, इसको पढ़ के जाना है. और इसका बैटल किसके साथ है? नो एम्बिशन कंट्रीज, राइट? कोलिशन देयर. Versus this one, right? Now the fifth part here. UNESCO, another UN body. You know, man and biosphere program. Now see, blueprint for the ocean. And I highlight this very important thing here. Ocean decade. See, anything which is highlighted at the global level, you should be prepared for the question in the exam. है ना? उसके लिए जो क्वेश्चन आ सकता है वो प्रिपेयर रहना है, क्योंकि वहां कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में आ सकता है. You might get question in the exam, right? So if you see here, ocean science decade, this decade has been highlighted by UNESCO, right? Coral reef, coral bleaching, impact on ocean, plastic pollution in ocean, marine pollution in oceans. Even UNESCO is now highlighting this one. See, ocean decade serves a vital platform for this one, right? And this conference was held in Barcelona. Now see, recently, see here, Ocean Decade Conference in Barcelona, Spain. That was in April 10 to 12. अभी कौन सा अप्रैल चल रहा है? अभी जो we are on the 5th April. This will be held. ये अभी होगा. Networking, dialogue, setting of joint priorities for ocean sustainability action. Or next year it will be in Nice, France. So what is first very important thing here? This one, right? Now look at here. So one area which you need to focus anything from current affairs about ocean part of, इस पे फोकस करना है. ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये चीज है, दिस वन, ओशियन साइंस डिकेड, राइट? That is will be another area which you need to focus here. So I'm writing here, ocean science decade. Clear? So I'm saving here. Now if you see that this decade, if I go to the decade part of it, है ना, ये चीज है यहाँ पर दिया हुआ है. ये चीज कब इसको प्रोक्लेम किया गया? 2017 में. ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस वी नीड फॉर द ओशन. एंड आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट इज हैविंग ब्लू इकोनॉमी, देन वी आर हैविंग डीप ओशन मिशन, scientific part of the ocean. Again, linking with environment, that is what comes with this here. See here, United Nations Ocean Decade. Given here, proclaimed by General Assembly. अब आप देखो क्या बॉडी का नाम है, ये चीज है इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन. प्रीलिम्स एग्जाम में ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आता है. इन प्रीलिम्स एग्जाम यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन. क्या पता ये ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ जाए इस बार. इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन, IOC, एंड इंडिया इज अ मेंबर कंट्री. इसमें इंडिया इज अ मेंबर कंट्री. Scientific research, exploration of the ocean there. This part, India is a member country. See here, coral reef and everything there. Ocean science. अब नाउ ये जो है, अब इसमें क्या करना है, ये चीज है. मैं आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है?
I'm giving you all those kind of document to read there. And again, this part I'll just highlight it. Okay. So this is coming like this one only. है ना, इसको मैं जूम कर दिया मैंने. Right? I marked it. Now what is very important here? This one. This commission. अभी हाल ही में वेल को लेके इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ये सब है. Now you can see this intergovernmental body, UNESCO, promote international cooperation marine science to improve management of the ocean coast marine resources, and India has a lot of marine areas. So this time sea and ocean is very, very important. 150 member countries are there. Ocean observation, survey, ocean science, oceanography, even tsunami warning, all this one thing, right? There's a part of their 60 years. See, for 60 years, IUC has worked behind the scenes. Now you see microplastic. Now ocean is getting suffering with microplastics. That ocean acidification. Now climate change impact, global warming and ocean acidification. तो ये चीज है जो है मैसेज जो है ये जो पार्ट जो आपको पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पर इवेलुएट मैनेज इनेबल राइट स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट ये जो चीज है. सो व्हाट आई डू हियर अनदर थिंग व्हिच यू हैव टू बी अबाउट अस. अब यहाँ क्या जाना है एक क्या अबाउट अस पे जाना है. इज ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइट वी वर्किंग ऑन दिस वन mission objectives see member states right यहाँ पे member states हैं. ठीक है this one given here. Now you see member states here just to show you that India is a member country here. See here. Can you see? भारत इसका सदस्य राष्ट्र है. क्या है इंटर गवर्नमेंटल. जब भी इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है बाई गवर्नमेंट्स. इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन. This is what I wanted to just show you that this is where the UNESCO program here, this one, right, which comes into that. और ये 60 ईयर से काम कर रहे हैं है ना. इट वाज फॉर्म्ड. अगर इसका हिस्ट्री जाना जाए इफ यू गो टू हियर ऑफिसर्स सेक्रेटेरिएट. इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है इसी ईयर. यूनेस्को के अंदर आता है नॉर्वे. नॉर्वे के अंदर आता है यहाँ पर. ही द पर्सन ऑफ सेक्रेटरी जनरल of this particular program there, right? Even if you go to there's a mission objectives, so you'll find here marine protected areas, mangroves, coral reefs, seagrass bed, kelp forest. ये सब ऐसे एरियाज है जो इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए. हेल्दी ओशन मैंने क्लास में हॉप स्पॉट बताया था. स्पॉट्स ऑफ होप राइट. वार्निंग सिस्टम, ocean hazard, climate change impact, all those kind of things. And SDG, Sustainable Development Goals, life below water, SDG 14, life below water, Sustainable Development Goals 14 there. तो ये पार्ट को ध्यान में रखना है. This is where things become important. ठीक है. This is what comes here.
Are you able to understand here? So I am now again sharing this one. इसके बारे में पढ़ के जाना है because questions can be asked in the examination there. Right? IOC. Now I'm giving here IOC. Clear? Are you able to understand here? So this is what I have mentioned here. Now I'm coming to the another organization, Food and Agriculture, FAO. Food and Agriculture. So for food and agriculture, तो अभी इसमें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको पता है हमास अटैक, FAO कंट्रीब्यूट फाइटिंग मैल न्यूट्रिशन एंड वहां जो पार्ट उस पर फोकस. तो फिफ्थ इज व्हाट? फिफ्थ पार्ट कम्स से दिस वेर यू टू प्रिपेयर विद द ओशन. This part you have to be aware of this. Anything coming from current affairs and the book, you will be reading about this area. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें हाईलाइट करता हूँ कुछ की वर्ड्स जो हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाना है. मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है. अब इसी में एक प्रोग्राम है, IUCN का प्रोग्राम है MFF. क्या है प्रोग्राम MFF का? मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर. Then another thing here, sea grass bed, like dugong and all this one, making this algae part of algal sea grass bed, kelp forest, और ये सब इंडिया के साथ कनेक्टेड है. एंड अगेन कोरल रीफ्स. Then again, what you have to read under this? You have to read about this one, MPAs, marine protected areas. Then, Mission Blue. इंडिया में दो है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड. मिशन ब्लू, हॉट स्पॉट्स. एक होता हॉट स्पॉट, अनदर हॉट स्पॉट्स. इसको पढ़ के जाना है. देन अगेन दिस वन, इंडिया में डीप ओशन मिशन, मैंने क्लास में डिस्कस किया था, समुद्रयान. इफ यू रिमेंबर, आई हैव डिस्कस दैट. एंड अगेन in this connection, what comes here? Blue economy. Then again, ocean pollution, marine pollution, like Great Pacific garbage or any kind of pollution, oil, garbage, plastic, जो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में आता है. यहां पर एक कन्वेंशन आता है, मार्पोल, कन्वेंशन मरीन पोल्यूशन, IMO. दैट कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम. बाकी चीजें फिर नेक्स्ट क्या आता है इसमें? नेक्स्ट आता है जो कि अभी मैंने बताया, ये चीज है इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल. व्हाट इज देयर? इंटरगवर्नमेंटल. ओशनोग्राफी कमीशन, अभी जो मैंने डिस्कस किया. और ये किसके अंदर काम करता है? यूनेस्को. दैट यू हैव टू रीड अबाउट इट, राइट? उसको पढ़ के जाना है. दैट कुड बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम. उस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड डोंट लूज आउट. ये सब जितने टॉपिक्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो, ये सब चीजों को रिवाइज करके जाना है. कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे. और एक और चीज मैं हाईलाइट करता हूं, ये चीज जो है, व्हाट इज दिस वन? इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेल्स. कहने में तो ओशन के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी आ रहा है, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, इश्यूज, कंजर्वेशन, वो सबको करना है.
ये पांचवा एरिया मैंने हाईलाइट किया, राइट। देन आई एम कमिंग बैक टू द दिस FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन सी हियर। तो इसमें ज्यादातर नहीं, इसमें मैल न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस किया गया है। अब देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है जो मुझे लगा कि एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें। कैमलिड्स क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स है। छोटे कैमल जो होते हैं, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स डिक्लेयर किया गया है। उसके लिए कैंपेन चल रहा है। अब देखो आप, टू टू हम्प्ड कैमल, ये कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया, बख्तरिया, इवन लद्दाख में भी है। कोल्ड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, ऑल दिस वन, ये छोटे कैमल्स होते हैं। एंड दिस कुड बी क्वेश्चन इन द एग्जाम, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। तो व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर दिस पार्ट ऑफ एग्जाम, सिक्स्थ वन, दिस वन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में हाईलाइट कर रहा हूँ। 2024 को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे ब्रीड्स ऑफ कैमल्स हो, एंड जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है कैन आस्क द क्वेश्चन देयर, उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज है। अब कैंपेन इज गोइंग ऑन, जैसे कि लद्दाख इज हाई लैंड, हाई एल्टीट्यूड एरिया क्या है? हाई एल्टीट्यूड एरिया में लद्दाख आता है। और डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट प्लेन एरिया भी सही है। कैमली डेवलपमेंट, conserving them and ecosystem, policies that support livelihood, develop public awareness campaign, protect traditional knowledge, decay, and heritage linked with such camelid, promote camelid products जो हमें कैमलेट से मिलता है, कैमल से भी हमें मिल्क वगैरह मिलता है, engage youth, empower this one। अब क्या दिया? what we can do all that is given here, ये चीज है। अब ये चीज देखो, छोटे कैमलेट्स, ठीक है। फॉर्म देन विच व्हाट कैन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन डू, मार्केट प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, व्हाट कैन रिसर्च कैन डू, साइंटिफिक रिसर्च ही, छोटे जो कैमल्स होते हैं, व्हाट गवर्नमेंट पार्टनर्स कैन डू, दिस वन। तो ये याद रखना है यहाँ पर जो है ना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। तो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन आई एम हाईलाइटिंग ऑल दिस। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, आई एम जस्ट अगेन मार्किंग अप, एंड देन अगेन आई एम शेयरिंग इट, saving the files here so that you can go to this camel email. FAO के द्वारा ये किया जा रहा है। अब मैं इसी पे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं? कि विच आर द कैमलिड्स इन इंड, सी हियर आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, कैमलिड्स, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग कम्स मीनिंग, स्मॉल कैमल देयर, दिस वन, ठीक है। दिस वन यू कैन सी हियर, you know Machu Picchu, where is Machu Picchu? South America. Machu Picchu is where? South America. वहां भी ये कैमलिड पाया जाता है, the double hump camel and all you find. Another one you can see. Now what is given here? Camelids are members of biological family. This, and you can see which were the dromedary camels, Bactrian camels, wild Bactrian camels, llamas, alpacas, vishunas, guanacos, ये है ना।
These are the camelids. Camels and llamas are cousins. क्या लिखा? You probably want sport. You don't find camels in Central and South America, but you can find out where other members of their. अब आप देखो क्यों why 2024 is the international year of camelids. तो आप देखो क्या लिखा है. This year is meant for raising awareness and making public policy to protect the ecosystem where these camelids are found, conserve these camelids, adaptation to climate change. Now see which animals are called camelids. These are 8 of them are there. Then again, what is a camel and camelid? Camelid refers to any of the event-toed ungulate. What is called here? Biology में कहाँ आता है? Ungulate में आता है. जैसे goat होता है, sheep होते हैं, camels वगैरह जो होते हैं, they are known for their adaptation. Harsh environment. जैसे camel होता है ना, harsh environment they can adapt. That's what comes. And this all see given here. Now what I want to bring here, this part is very, very important for the exam, and please make sure that you are reading through all this kind of documents. इसको पढ़ के जाना है. Right? This is what you have here. This is what travel is given here. What I'll do here, see here. I will now go into this one. And I'll share the documents, you know. I'll give you this document here. This document will be shared to you. ये चीज है. And which organization looking into this? FAO, Food and Agriculture Organization. Oh, see, right? Officially, it is done by FAO. Are you able to understand here? FAO is looking into this particular. So now again, I am sharing this document here. FAO. International Year of Camelids. Save. Right? FAO is taking the lead here. And again, what is very important here, you have to know these animals there. This what is comes here, which are those are there. Now look at here this one. ये जो biological कई बार क्वेश्चन क्या होता है, biological पूछ रहता है. Like for example, if I have to just highlight here, look at here, ये चीज जो है, ये जो scientific knowledge जो है, the 3 old world camelids, कौन सा है? Dromedary, domestic bacterian camel, wild bacterian camel, और बाकी जो है न्यू वर्ल्ड कैमलिड्स में आता है. लाइक फॉर एग्जांपल जीनस लामा, देन सेपरेट विकुगना, है ना, लामा बिलोंग्स टू दिस वन, एंड देन आल्सो गुआनको. These are 6 of them. तो ये पार्ट को पढ़ के जाना. दिस राइट, विच आर दोज पार्ट ऑफ कैमलिड्स. अब यहाँ क्या लिखा है? ओनली सी only the free ranging population of wild bacterian camel that is endangered. See here, vicuna are listed vulnerable. Right? So I'm now sharing this document also. Types of camelid. मतलब आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में दे रहा हूं. आई एम गिविंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स फॉर यू टू रीड. Right? Types of camelids. Now tell me whether India has got these camelids.
Yes, India has got this kind of candidates. If yes, where? If yes, then where? मैंने अभी जस्ट बताया है, लद्दाख, लेह लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट. कहां पर पाया जाता है? लद्दाख. राइट, सी हियर, नुब्रा वैली. अब यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको कनेक्ट कर सकता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. और आपको पता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो कोई भी इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है, कोई भी यूएन एजेंसी का, तो इंडिया इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ दैट. इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हियर? सो इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैंडिडेट्स में 2024 इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. क्या लिखा हुआ? डबल हम्प्ड कैमल्स. In India, about 300 double-humped camel are present in Nubra Valley of Ladakh. Lama, Alpasa, Guanaco, and Vicuna are 4 members of New World camelids. Lamas and alpaca are domesticated, whereas Guanaco and Vicuna are wild. Very, very important. Right? These are very, very important for the examination. So that you have to focus on that. ये चीज को फोकस करना है यहाँ पर. और एक बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, राइट? यस, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया वो भी एग्जाम में. जस्ट 1 सेकेंड. Just 1 second, I'm getting back there. Are you all able to understand here? Whatever I'm trying to make you understand. That this India is also home of camelid. India is also home of camelid. तो ये चीज को नुब्रा वैली याद रखना है. कहीं ना कहीं कनेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहेगा. तो अब ये जो है, तो बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस वन, राइट? तो जो भी डॉक्यूमेंट्स, अब देखो ये चीज है ना, वाटर कैमलिड्स, सी वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स. सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रहा है. क्या कहते हो? यही डॉक्यूमेंट भाई, यही सिंगल डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है. क्या क्या मिलता है हमें? मिल्क, मीट, फाइबर. सी इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कैमलिड. देखो अब कैमल का भी है और कैमलिड का भी दिया हुआ है. दिस आर कैमल, मिल्किंग और कैमल, कैमल रेस, कैमल डेकोरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इसमें लिंक किया गया. Very important document is this one. What you find is a very important document given. So what I'll do here, another one. Camelids in India. Another document. ये अप्रोच से आपको पढ़ना है, ठीक है? लास्ट वन व्हिच आई एम कमिंग हियर, आई हैव गिवन द एफएओ. ये कहां पर आता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. And what you have to study here? You have to connect with this one. Camelids in India, लद्दाख. जो डॉक्यूमेंट है उसको रेफर करना है. Now what I'm coming here, the 7th one. There's another important area this year exam, forest. And there is a UN body called UN Forum on Forest, United Nations Forum on Forest. So now coming here, another very important thing which you need to know about this organization. United Nations, right, Forum on Forest, Department of Economic and Social Affairs. And recently International Day of Forest has been celebrated. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब 19th session on of the
UN Forum Forest will be held from 6th to 10th May 2024. Prelims कब होगा? जून में होगा, 16 जून. ठीक है. See here, international element for a forest part of is there. Global forest goals report. Global forest goals and targets what is given here. UN strategic plan for forest 2030. Right? International Day of Forest यहाँ दिया हुआ है. तो अब यहाँ पर जो चीजें हैं फॉरेस्ट के बारे में, राइट, फॉरेस्ट कंडक्ट का पार्ट ऑफ इट, that becomes a very important part of it, right? So what you have to be aware, I'm just adding this document, last document, and with this we'll end up the session here, but I'm keeping it so that when you visit this site you are able to just see that anything in current affairs on forest, you are reading any global initiative, national initiative, and even the local initiative, you should remember it. You should read about it. So what is the last point I'm coming here from UN perspective? Third, 7, forest. अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है? Geography. From geography, right, India's forest. जो भी आपके पास बुक है, मटेरियल्स है, you will read about that. Mapping part of it. Again, tropical forest, temperate forest, deciduous forest, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये सबको मैपिंग के थ्रू आपको जानना है. कहीं ना कहीं कनेक्टेड क्वेश्चन होगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, व्हाटएवर. देन अगेन हियर दिस वन, मैंने एक बार क्लास में बताया था, फॉरेस्ट एक्ट्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, टीएन गोदावरम जजमेंट मैंने क्लास में कवर किया है. आई हैव कवर्ड इन द माय लाइव सेशन आल्सो देयर, एंड इन द वीडियोस यू विल फाइंड दैट. फॉरेस्ट, then scheduled tribe and other forest dwellers, Recognition of Rights Act, FRA. So forest acts and policies in India, deemed forest, unclassed forest, ये सब पढ़ना है. Then here what you have to read about, we have a climate change perspective, this one, red plus, reducing emission from deforestation and forest degradation, and there we have now national strategy on this to grow the forest as a carbon sink to capture CO2 gas. Then what comes here for climate change for Green India mission, that is under NAPCC, National Action Plan on Climate Change. And again, India want to become net zero by 2070. So will capture 2.5 billion tons to 3 billion tons of carbon dioxide gas, carbon part of it, through the forest. And then again, when you're reading mapping part, India's forest and mapping parts, so please connect this one. This connect with the Indian Forest Survey report. Forest Survey of India, Dehradun, comes out biannual. Every 2 years it comes about the Forest Survey report. And this year, last year, 2023, odd number पे आता है. 2023 Forest Survey report covers the data of 2000 up to 2021. 2023 के जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, 2021 तक का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का आता है वहां पर, उसके पर जानकारी होती है. अभी इंडिया में अबाउट 24% ऑफ द लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट. ठीक है. सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे जो भी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स में पढ़ते हो आप, वो सबको पढ़ना है. देन अगेन दिस वन, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, एक ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अफ्रीका, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन को ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ. अब यहाँ दो चीज है, एक अफ्रीका का है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ईस्ट टू वेस्ट है ना, साले रीजन में
ट्रीज को ग्रो किया जा रहा है सहारा डेजर्ट के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। और एक है जो कि हम पानीपत सोनीपत हरियाणा से होते हुए गुजरात तक कम करेंगे इंडिया का। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ये याद रखना यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट दैट लिंक्ड विद रियो कॉन्फ्रेंस 1992 रियो अर्थ समिट। मैं लिख देता हूं ये कब आया था, 1992 रियो अर्थ समिट। दैट टाइम दिस आइडिया ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाज ब्रॉट। तो उसको वहां पढ़ना है फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रीन वॉल के बारे में। फिर यहाँ पर आता है बॉर्न चैलेंज from climate change perspective. There's come bond challenge. That's where the targets were kept for growing trees and on hectare of land by governments. Bond challenge. और इसी को कनेक्ट करना है यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, एंड ऑल्सो विद यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू combat desertification, United Nations from framework convention of climate change, and again CBD, convention of biodiversity पर। अभी जैसे अमेजोन जो है, अमेजोन फॉरेस्ट जो है यहाँ पर जो है, अभी जो अमेजोन फॉरेस्ट को लेकर जो है इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस पे जो इश्यूज आ रहे हैं, और अभी दूसरा कहाँ आ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, palm cultivation and all these issues are coming there। तो वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दैट इज ऑल गेटिंग अफेक्टेड। यहाँ जो इश्यूज हैं, इंपैक्ट्स हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इस बार के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब एरिया में हाईलाइट करो करंट अफेयर में, वेर यू हैव टू रीड अबाउट ऑल दिस एरियाज, वेयर द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया में जहां जहां इंपैक्ट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन। अभी मैं कुछ देर पहले क्या था, बैंगलोर में वाटर क्राइसिस का एक रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन अक्रॉस कावेरी बेसिन, इश्यूज विद द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्ल्ड वाइड, है ना, यहाँ पे सारी चीजें जो है। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आता है जो कि ये चीज है, यूएन फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, रियो कॉन्फ्रेंस में अर्थ समिट, अर्थ समिट में फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को लाया गया था, उसको कनेक्ट करना है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर, राइट, ऑल दिस गेट कनेक्टेड विद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज अनदर एरिया वेयर यू कैन गेट क्वेश्चन। और आपको पता है प्रीलिम्स एग्जाम इज नाउ कॉमन फॉर सिविल सर्विस एग्जाम एंड ऑल्सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, राइट, यू नो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एंड सिविल सर्विस एग्जाम बोथ आर कॉमन। तो फॉरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस कैन बी देयर। सो आई एम हाईलाइटिंग द एरियाज फॉर यू टू रीड। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक और चीज आपको पढ़ना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है वो चीज झूम कल्टीवेशन, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ, प्लीज रीड दिस वन, झूम कल्टीवेशन ऑल्सो, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड पर्टिकुलरली हियर वेयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये भी हिंदू पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, लॉट ऑफ एरियाज द क्वेश्चंस हैव कम। सस्टेनेबल झूम फार्मिंग, उसको पढ़ना है ऊपर। ठीक है, तो आई हैव गिवन सो मेनी थिंग्स फॉर यू टू रीड। आज का जो सेशन यही है कि मैंने हाईलाइट किया कि क्या क्या ऐसे चीजें हैं जहां क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेर यू कैन गेट क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन देयर, राइट। आर यू all able to understand here? So share this document. I'm going to share all these documents there. ठीक है, so now any doubt you have, I'm done with the things. Important areas for the questions in the exam from UN perspective I have covered there. Going to the website, highlighting the points, और वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एम कुमार, थैंक यू एम कुमार,
राइट एम कुमार हैज रिटन दैट आज के सेशन में बहुत सारे नए ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनफॉर्मल बॉडी तो एकदम नया था, साथ में इसमें से बहुत सारे तो PT65 में भी कवर नहीं होता। थैंक यू सर। आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल टू you, M. Kumar, for your appreciation. See, my target is that you all are able to solve questions. And all these documents which I am going to share in my Telegram channel, please make sure to go through it. आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो मैं शेयर कर रहा हूं, अभी जितने भी चीजों को मैंने किया है, मेक श्योर रीड इट। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। खुशी तिवारी है कि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय 12th and beginning for UPSC. So what should I study first? Like from where should I begin? Khushi, please start from NCERT book. You are just the beginner. Please start from NCERT book. I've already mentioned start from NCERT book. ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये सब एडवांस लेवल है। फर्स्ट टू स्टार्ट फ्रॉम NCERT बुक्स। You start from the NCERT book, start reading from there. ठीक है, वहां से स्टार्ट करना है आपको। खुशी तिवारी के लिए मैं कह रहा हूँ कि लेट स्टार्ट फ्रॉम द NCERT बुक्स एज अ बिगिनिंग पार्ट, राइट? ओके, जो लोग जूम में, एनी क्वेश्चन यू हैव? पूजा, वैभवी, श्रेया, दीपेश, एनी क्वेश्चन यू हैव? ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से और उसको पढ़ना है। नाउ रही बात जनरल साइंस क्लासेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, रिवीजन, रिमेंबर दैट दिस फॉर रिवीजन पार्ट। आई विल बी फास्ट ट्रैक रिवाइजिंग पार्ट ऑफ इट। द डेट्स विल बी शेयर्ड टू यू. That will be after coming from Pune because Sunday I'll be going to Pune, and from Sunday from Pune I will be there for 1 week. Then on Sunday 15th of April I'll be back to Delhi. After that I'll conduct those sessions there, and also marathon for environment and revision for that, and marathon for science and technology. Dates will be shared to you. ठीक है, अब मैं कुछ दिखाता हूँ। मैं अगर ये ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज we'll be ending the session here. Just 1 second. कई बार होता है ना, net may not be very fast, right? That part is there. ठीक है, so I was just trying to download and show you something, but because of the not having very strong net is not getting there. So let's see there. But be in touch there, right? Be in touch so that or Dipesh, anything you have to ask? मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ क्लास में, जो भी मैं सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। See, I'll tell you very frankly, Kushi, demo class, you might be given this kind of thing, demo class by the institute. Demo class is not the part of it. You have to always see, ICRA will provide you the videos there, the recorded videos, and there is a rotation part of it. So you'll be getting those parts because now my class is getting over. But from Monday, you'll have new classes there. So from Monday, you can join the batch, right? From Monday, you can join the batch there. अब देखो, मैं खुशी में आपको सिंपल बता देता हूँ। अब जैसे कि साइंस टेक का जो मैंने NCERT का बैच लिया है, जहां आप डेमो के लिए अभी आ रही हैं, तो मैंने ऑलरेडी वहां पर अभी कल खत्म हो जाएगा। अब बीच में डेमो के लिए है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मंडे से न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, इट्स बेटर टू ज्वाइन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, ठीक है? सो नथिंग टू वरी अबाउट। और जो चीज आपने मिस किया, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, यू कैन गो थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस, वो चीज है।
I think this helps. And see, you are just 12th pass. अभी आपने 12th पास किया है, अभी तो आपको लंबा जर्नी जाना है, ठीक है, अभी तो आपके लिए लंबी कहानी है, तो अभी तो आपको बहुत लंबी दूरी तक सफर करना है ऊपर, है ना। तो अभी तो आपने 12th पास करके तैयारी के लिए पा रही हैं, तो आप ज्वाइन कर लो, यू ज्वाइन द बैच एंड स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम एंड मंडे ऑनवर्ड देयर विल बी न्यू सब्जेक्ट, तो वहां से बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। एंड माय साइंस टेक क्लास एनसीईआरटी बैच, तो दैट यू कैन हैव रिकॉर्डेड वीडियो, और उसमें जो इकरा आईएएस का बुकलेट है, दैट यू कैन फॉलो दैट। या थैंक यू राम, आई लव यू टू राम। सो फ्रॉम जोधपुर राजस्थान, ओके। एंड आज मैं एक विजन आईएएस के स्टूडेंट से मिला हूं मैं, इस्कॉन मंदिर में, इन इस्कॉन मंदिर इन कानपुर। तो उसने मुझे पहचान लिया उस टेम्पल में। ही वॉज ऑल्सो माई स्टूडेंट फ्रॉम विजन आईएएस इन 2021, ऑनलाइन स्टूडेंट, कोविड के टाइम में था, बट ही रिकॉग्नाइज्ड मी, ये बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू खुशी, थैंक यू, आई रियली ग्लैड देयर। डोंट वरी खुशी, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। अगर आपने ठान लिया है कि नहीं आपको यूपीएससी करना है, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नो टर्निंग बैक। आप ज्वाइन कर लीजिए, स्टार्ट फ्रॉम मंडे क्लासेस, यू ज्वाइन द, स्टार्ट द बैच, गो थ्रू दैट, और वो रिपीट में होता रहता है। लेटर ऑन जीएस बैच होगा, इन द जीएस बैच आई विल बी कवरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मोर डिटेल पार्ट ऑफ इट, वो सारा चीज, ठीक है। So anything here, any student want to interact with me and want to ask? All right. If not so, then I'll stop the class. Dipesh, you have to ask anything? No, sir. Okay, Dipesh. Are you able to understand everything, Dipesh? Yes, sir. Okay, good, very good. I'm really very glad that you are able to understand everything there, right? That's really good there. One thing I would like to say that Uh, these all policies that the international organizations or national initiatives have been taken, like right. we are not focusing that much on preventive part, like shaping out the people Correct, correct, habit. correct. And No, you are initiatives like Samudra Pehredar, the Bilkul. armies or the navy men, they are working as not the defending thing, but they are cleaning or Right. doing something different than their trend. So I feel like there is something lacking behind. Yeah, you're right. You're right, because we are lacking in the implementation part. That is true, because we have so many issues and challenges today we are facing, but the concerted effort to tackle those problems are not that much effective. You are very true, Dipesh. You are very true about that. That's what I want all of you when you become IAS officer, right? The future officers of our country should work towards this kind of grassroots level, local level, and do something transformation, right? वो Yes, मेरे sir. लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए मैं ये सारी चीजें बताता हूँ। बट यू आर वेरी ट्रू, इवन आर्मी ऑफिसर, समुद्र पहरेदार, एंड ऑल दिस थिंग, क्लीनिंग द pollution of the water, everything there, to that concerted effort and all these things which are not coming up to the mark, that's true. ठीक है, so you are very right, that will be, this kind of analytical perspective will help you write the mains answer. मेंस के आंसर में आपको काफी हेल्प मिलेगा उसके लिखने के लिए, ठीक है। Yes. तो मुझे मतलब आप जैसे स्टूडेंट्स जब क्लास में होते हैं या ऑनलाइन है, आई फाइंड इट वेरी यूजफुल, एंड टेक माय वर्ड्स, यू विल ऑल क्वालिफाई द एग्जाम। अपने हौसले को बुलंद रखना है, ठीक है, जो राइट ट्रैक उस पर चलते जाना है, राइट, एवरीथिंग विल बी ओके। एंड again, part of it. So I took such a long session going through the website, marking the point, writing the note points, some of the important points. This all will help you out, correct? So please download all these documents from my Telegram channel, and please make sure to go through it. ठीक है?
ठीक है, all everyone. This Yes, sir. Thank you, sir. yeah, Big Bang series, right? And STEAM. What is STEAM? Environment, Science, Tech, Education, Enrichment module. This is what I have given the name STEAM. And I think you like this name. Environment, Science, Tech, Enrichment, Education, Enrichment module. So that is really going to be there. And very soon my website will be there, and app. I'm also developing mobile app. So you'll be getting all those kind of things from mobile app also there. I'm working towards that, right? So thank you, M. Kumar. Thank you, everybody from this YouTube channel, and also thank everyone who are there, the part of the this Zoom session, right? And keep your health, right? Study well, and in my Telegram channel, you will get future live sessions kind of a notification. हो सकता है कि मैं, क्योंकि अभी पुणे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम होगा, क्योंकि देयर विल बी क्लासेस एंड आल्सो देयर विल बी सम डाउट सेशन विद द स्टूडेंट्स ऑफ इकरा IAS. So I might not be able to take time in the live in the evening time, but don't worry. After I return back to Delhi, I'll start it. ठीक है? तो मैं आपके साथ में हूँ. आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है. I am there for you, right? So जो लाइव सेशंस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. आप मेरे इंस्टाग्राम में बने रहिए. इंस्टाग्राम से भी आपको मिलता है ना, मेरे नीरज नचिकेता इंस्टाग्राम में, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या, वो भी आपको अपडेट मिलता रहता है. So you can also join my Instagram to get all those updates about my personal whereabout. You'll get to know. And in Telegram also I'm sharing it. Another thing is that my humble request will be that please share my initiative to others, so that more and more students who are suffering right now, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि गलत ट्रैक में चले जा रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है, एंड दे आर ऑल गोइंग रॉन्ग वे and they're not able to go to the right way. I wanted to help them out. So please, my humble request will be that this YouTube channel and also my Telegram channel and all these initiatives, please try to spread to maximum number of people, to your friends and everyone, and let them come here to this platform and interact with me. मैं चाहता हूं कि जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सारा चीज, वो उनको मैं हेल्प कर सकूं, गाइड कर सकूं. They are helped and guided by me, so that they are able to qualify the exam. So please share with your friends. ठीक है? Sharing is caring. ठीक है? Okay, guys. मुझे बहुत अच्छा लगा. So I'll stop here and we'll meet soon there. All right. So thank you, everyone. Thank you. Take care. Bye bye. Good night. Bye.